So today we are going to begin with the lesson number 6, that is conditional statement in Python. So in this chapter we are going to study about the operators, statements, control structures, decision making statement and Python turtle. So let's begin. So there are situations in life when we need to decide based on a situation. हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो कभी हमें चीजों को डिसाइड करना पड़ता है सिचुएशन पे बेस्ड होकर. So for example, if it means I will stay at home or else I shall visit the market. अगर बारिश होगी या तो मैं अपने घर पे रहूंगी या फिर मैं अपनी मार्केट जाऊंगी. So similar situation arises in programming as well, where we need to make some decision and based on these decision execute a set of commands. सेम हमें क्या करना पड़ता है पाइथन में भी प्रोग्रामिंग में भी हमें लैंग्वेज क्या करना है डिसीजंस लेने पड़ते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग कमांड्स के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करना पड़ता है. So we need to determine which action is to take and which statement is to be executed. तो हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि हमें कौन सा एक्शन लेना है और कौन सी स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है. So if the outcome is true or false, अगर हमारा आउटकम ट्रू या फिर फॉल्स है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर is a set of computer programs which contains instructions that tells the computer how to work. कंप्यूटर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें क्या होता है इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताता है what it has to do and how it has to work. So before writing a program, one must first plan the program. In this chapter we will learn about decision making statement of Python. So अगर आपको कोई प्रोग्राम प्लान करना है तो पहले उसको क्या करना पड़ता है पहले क्या वन मस्ट प्लान तो पहले उसको आपको प्लान करना पड़ता है अगर आपको कोई प्रोग्राम लिखना है तो. सो इन दिस चैप्टर हम किसके बारे में पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटर्स. So operators are the special symbols that carry out arithmetic and logical computation. क्या होते हैं आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनमें अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस होती हैं. The values operated by the operators are called operands. जो values operate होते हैं operators से उनको operands कहते हैं. There are many types of operators in Python like arithmetic, relational, logical, assignments. बहुत सारे टाइप के होते हैं. Arithmetic हो गया, relation हो गया, logical हो गया, और assignments हो गया. Now what are arithmetic operators? Arithmetic operators are used to perform mathematical operations. Mathematical operations को perform करने के लिए use होती है. So plus, minus, hashtag, divide. Plus क्या होता है addition and concentration in strings. So this is the example 100 plus 62 162 हो जाएगा. So good plus evening क्या हो जाएगा आपको good evening. Subtraction में क्या होगा so 200 minus 40 that is 160. Multiplication and replication in string that is 7 into 5 35. Python into 3 that is Python. So division divide करेगा 27 divide by 3 9.0. Operator double slash floor divide वाले का क्या होगा floor division divide by integer division that is 20 divide by 5 that is 4. Modules remainder that is 67% 9 4 हो जाएगा. Exponentation 2 into 3 that is 8. So relational operators, what are these? Relational operators are used to compare the values. इसलिए यूज होता है compare करने के लिए values को. So they are also known as comparison operators. उनको क्या कहते हैं comparison operators कहते हैं. So they either return true or false according to the condition. किसके according return करते हैं conditions के according. These are the operators. This is the meaning and this is the examples. So this is the sign of greater than, that is greater than or equals to 7, greater than or equals to 9, false. Less than or equals to 1, less than or is equals to 5, true. Equals to 7 is equals to 9, false. Not equal to 7, not equals to 5, true. Now let's talk about logical operators. Logical operators perform logical and logical or and logical not operations. What are these? And or not. क्या है ये operators हमारे पास तीन and or and not. And both the operands are true, then condition becomes true. अगर हमारे दोनों operands true है तो हमारी condition true होती है. Examples greater than x is equals to 2, x is equals to 2, greater than y is equals to 2, y is equals to 2, x and y is equals to x and y false. So
Now or if any one of operands is true then condition becomes true. अगर इनमें से कोई भी ऑपरेंड ट्रू है तो कंडीशन क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है। इनमें से एक है ट्रू, तो ट्रू है, ट्रू फॉल्स में से एक ट्रू है ना तो ट्रू आ गया, फॉल्स दोनों फॉल्स है तो हमारी क्या कंडीशन हो गई, फॉल्स हो गया। नॉट इफ ऑपरेंड इज फॉल्स देन कंडीशन बिकम्स ट्रू, अगर हमारा ऑपरेंड फॉल्स है तो कंडीशन क्या बन जाती है, ट्रू बन जाती है। लाइक a इज इक्वल टू फॉल्स तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गई कंडीशन। सो ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, नॉट अ, so ये क्या हमारा false हो गया। Now let's talk about assignment operators. Assignment operators are used to assign values to the variables. ये किसमें यूज होते हैं, assign करने के लिए values किसको, variables को। So is equal to assign the values from right side to variable. right side से variable को assign करती है values। So x equals to 15 assign करा, 15 into x, फिर यहाँ पे 15 to x assign कर दिया। So print करा x has to print the value of x 15 plus or equals to add and assign the value of variable, add the assign the value किसको, variable का। a क्या है, is equals to 20, a plus is equals to 4, a is equals to a plus 4, that's print a, हमारा आंसर क्या है 24। now operator is minus and subtraction and equals to, subtract and assign the value of the variable, a is equals to 20, a minus equals to 4, a is equals to a minus 4, that's print a, multiply and assign the value to the variable, that is a is equals to 20, a into is equals to 4, a is equals to a into 4, brings करना है a आंसर है 80। divide and is equals to divide and assign the value of the variable, a is equals to 20, a divided by is equals to 4, a is equals to a divided by 4, that is print a, that is 5.0। now fact folder operator, this then determines the order in which expressions are evaluated। determine the order जिसमें expression क्या होता है, evaluate होते हैं। So we can predict the outcomes of an expression। हम क्या करते हैं, predict करते हैं outcomes expression के, जो हम determine कर सकते हैं overall value of the expressions। So operator है हमारा parenthesis, multiplication, divide, division, and addition, subtraction and assignment। So first, second, third and fourth priority है हमारी। Now statements, what are these? Statement is the executable part of any program। क्या executable part होता है किसी program का? If it is an instruction that the Python interpreter executes to produce output। ये क्या instruction है कि Python interpreter क्या execute करेगा, execute करना produce करने के लिए output को। There are three main types of statement, तीन main types के statements होते हैं, simple, expressional and compound। So simple क्या है, a simple statement lies entirely within a logical line। किसमें entirely lie होती है, एक logical line में, that is we do not need to place more than one statement on a single logical line। हमें एक से ज्यादा statement को place नहीं करना होगा single line पे with a semicolon as a separator। semicolon को separator की तरह Python recommend करता है one statement per line to make programs more readable, जिससे programs easily readable हो। like example name is equal to Harpreet। now expressional statements, expression statement is a type of instruction that combines variables, values and operators and evaluates down to a single line। क्या करता है, एक टाइप का इंस्ट्रक्शन आता है जो कंबाइन करता है वेरिएबल्स को, वैल्यूज एंड ऑपरेटर्स को एंड इवैल्यूएट करता है down to a single value। so example 2 plus 7 that is 9। now compound, some of compound statements are if for while, like a compound statement contains one or more statements and control their execution। उसमें एक से ज्यादा statements होता है और कंट्रोल करती है एग्जीक्यूशन को। इट हैज वन और मोर क्लॉजेस अलाइंड एट द सेम इंडेंटेशन। एक से ज्यादा क्लॉजेस है जो अलाइन होते हैं सेम इंडेंटेशन पे। ईच क्लॉज हैज अ हेडर स्टार्टिंग, हर क्लॉज में हेडर स्टार्टिंग होता है किससे, कीवर्ड से, एंड एंडिंग होती है कॉलन से, फॉलोड बाय अ बॉडी व्हिच इज अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स। नाउ कंट्रोल स्ट्रक्चर, कैसे कंट्रोल करते हैं, the set of instructions which are executed in a sequential manner is called a program। जो set होता है instruction को execute होता है sequential manner में, उसको program कहते हैं। in some situations we have to change the order। कुछ situations में हमें order change करना होता है। execution of program based होता है on conditions और repetition of statement until conditions are met। तो conditions नहीं मिलती है हमारी, so control structures are used to और change the flow of execution। किसमें यूज होगी, change करने के लिए flow of execution। तो तीन basic control structures होते हैं, sequential, conditional and loop। These are the three basic control structures। What is sequential?
A sequential control structure shows one or more actions. ये एक से ज़्यादा actions हो करता है following, एक दूसरे को follow करते हैं each other in order. So all actions must be executed without any skip. सारे instructions execute होंगे, कोई भी skip करे बिना. Examples of actions are calculating totals and printing them. जो totals आप calculate करते हो फिर उनको print करते हो. Now conditional. A conditional control structure lets the program decide the flow of program execution. एक program को let करके decide करेगी program का execution. ये ये बता रहा है program को which actions to take, कौन सा action लेना है on certain conditions to base. If else, later, and nested if statement come under. We talk about loop. The loop control structure enables a program to perform one or more actions. लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर जो एनेबल करता है प्रोग्राम को परफॉर्म करेगा एक और एक से ज्यादा एक्शंस को रिपीटेडली as long as certain conditions is met. The fact folder Python program gets structured through indentation. किसके थ्रू स्ट्रक्चर होता है? इंडेंटेशन के थ्रू. Code blocks are defined by their indentation. जो कोड होता है ब्लॉक्स होता है किससे डिफाइन होता है? इंडेंटेशन से डिफाइन होते हैं. All the statements in conditional and looping statements are structured using indentation. कैसे स्ट्रक्चर होता है? इंडेंटेशन को यूज करके like one type space. So this principle makes it easier to read and understand other purpose Python code. principle easy बनाता है to read करना, understand करना other people's Python code को. So block 1, block 2, block 3, block 2 continuation, block 3 continuation manner. So now decision making statements. What are these? So decision making in Python is done by conditional statements. कैसे होता है? Conditional statements होता है जो decide करता है flow of program execution. We have a number of situations where we may have to change the order of execution. The number of situations होती है जहाँ पे हमें order of execution को change करना पड़ता है of statements जो कि based the certain conditions पे. This involves a kind of decision making. इसमें क्या involve होता है? एक तरह के decision making involve होता है देखने के लिए whether a particular condition has occurred or not. कोई condition occur हुई है या नहीं, and then direct the computer to execute certain statements accordingly. When a program breaks the sequential flow, जब program break करता है sequential flow का jump करता है another part of the code पे, उसको हम branching कहते हैं. Decision based होता है situation पे, जिसको हम logically क्या कहते हैं? Conditions कहते हैं. In Python programming there are 4 conditional statements. 4 conditional statements available होती है. That is if statement, if else statement, if else later, and nested if statements. So what is if statement? So the if statement is the simplest conditional statement. ये simple सी conditional statement है हमारी, जिसमें क्या होता है? Body of statements होता है which to execute करता है only when the condition evaluates to true. So if the condition evaluates to false, then the control of execution is false. अगर condition हमारी false आती है तो control जो होता है execution वो pass हो जाता है next statement से जब after it block. So condition body of if that is true, so false भी हो जाता है हमारा. Now syntax क्या है? If condition body of if condition and body of if program क्या हुआ हमारा? Program 1 to check whether a given number is positive. Program 4 ये हमारा है. So if statement is made up of the keyword, statement अगर हमारा keyword से बना हुआ है, किससे follow होता है? वो condition and a colon से follow होता हुआ. And as in if number is less than 0, is greater than 0, the lines following the colon must be in a block. line follow करनी है colon को किसमें होनी चाहिए? block में. And if the given condition is true, अगर my given condition true है, then the statement is in the if block will run the statement if block में वो run करेगी. Now if else statement, the if else statement checks for a condition if it is an extension of the simple if test statement. किसका extension होता है? Simple if statement का extension होता है. The if statement will check the condition. If statement क्या करेगी? Check करती है condition. It is true. The if block statement is executed. अगर true होता है जो if block statement है वो execute होता है. If the condition is false, then if it executes else block statement. So syntax क्या है हमारा? If condition body of if, then else condition, then body of compare and print the largest between two number. इन दो नंबर से largest क्या है हमें compare करना print करना है. प्रोग्राम कोड हमारा ये होगा और हमारा आउटपुट हो जाएगा इंटरेक्टिव मोड पे. So in this example, the given statement of number 1 is greater than number 2 होगा. number 1 greater than number 2 से, then so the statement in the
if block जो statement हमारे if block में वो execute हो जाएगी. Now if elif else statement, what is this? Is ये एक दूसरे टाइप का statement है. if statement of if statement where multi-part decisions are involved. So multi-part decisions involved होते हैं. A multi-part decision is a chain of ifs. क्या होता है? chain होता है ifs का, in which statements associated with each else is an if or elif. जो statement क्या होता है? associated होता है else से, तो या तो if होगा और else होगा. In this, the condition in -1 of if statement is false. The condition 1 of if statement is false, we check for the condition of 2 of the next else block and so on. If all conditions are false, अगर हमारी सारी conditions false है, body of else is execute. जो body होती है else की execute होती है. Only one block and among the several if else block is executed according to the condition. The if block can have only one else. If block में खाली एक else होता है block, but it can have multiple elif. इसमें multiple elif blocks भी होते हैं. Next क्या है? If condition 1 body of if elif, condition 2 body of else, then else की क्या है हमारी condition body of else. Now program feature. Input the marks from users and print the grade. Input करना है marks हमें user के and print करना है grade. This example, if marks are greater than or equals to 90, अगर marks ज़्यादा है equal है 90 के, then the statement following if will be get executed. Statement if को follow करिए, उसको वो execute होगी, print करेगी grade A1. The marks are greater than or equals to 80, अगर 80 है और lesser than 90 से तो first elif will be executed, पर elif execute होगी, then हम print करेंगे grade A2. The marks are greater than or equals to 70, अगर marks में ज़्यादा है greater than है और ये या फिर equals to 80 के, तो 70 के बाद less है हमारे 80 से, तो second elif will be executed. Second elif का execute होगी, that is grade B1. print करेंगे grade B1 if the marks are greater than or equals to 60, अगर ज़्यादा है equals to 60 के और less than हमारे 70 से, then third elif will be executed and print करेंगे grade B2. If the marks are greater than or equals to 50 but less than हमारे किसी 60 से, then fourth elif will be executed और print करेंगे grade C. The marks are less than 50 से हमें else execute होगा, print करेगा grade. Nested if statement. Nesting is the process of placing the if or if else or elif statement in another statement. दूसरी statement place करने का होता है process होता है. It enables us to make complex decisions. इससे हम complex decisions बना कर पाते हैं based होते जो हमारे different inputs पे. इसलिए यूज होता है check करने के multiple conditions को. Nested if statement means if indented blocks inside another, if else in indented block, the second nested if indented block will run. जो second वाला है वो run करेगा only जब first if condition हमारी evaluate होगी. Syntax is if condition 1, condition 2, statement 1, else statement हमारी 2 and else statement 3. So here condition तो 1 और 2 है, statement 1 and statement 2 and statement 2. Now program code क्या हुआ है हमारा print greatest number among the three number. हमें greatest number print करना है तीनों नंबर में से. program code ये हमारा और output हमारा interactive mode में. So in this example user ने input करे 3 number 80, 90 and 20. So the first condition will check whether 80 is greater than 90. पहली condition check करिए 80 greater than 90 से या नहीं. The condition goes to false. Condition किसमें चली जाएगी? False. So outer if block will not get executed. जो outer if block है वो execute नहीं होगा and jump करेगा वो outer else block में and test करेगा condition 90 then 20 in the inner if. Inner if में करेगा. Now the condition goes to true. Condition किसमें चली जाएगी? True पे चली जाएगी. So the inner if block will get executed. जो inner if block है वो execute होगा and show करेगा number 2 is greater than greatest. Number 2 हमारा 90 वो greatest. Python turtle. Turtle is a pre-installed library of Python. क्या होता है? Turtle एक pre-installed library होती है Python की जो which is used to create shapes. किस लिए यूज होता है? Shapes को create करने के लिए. This library helps understand the word of programming. This help करता है understand करने में word programming का in fun and interactive way. So importing turtle library कैसे import करते हैं? So this is the functions and commands of turtle library. We need to import turtle class. हम import करने के लिए turtle class module in the program first that needs to create the turtle library in Python 3 windows. Turtle library होती है Python 3 में windows होती है.
So we will write the program in Python idle. हमें open करना है Python idle interactive mode में type करना है foreign code, that is import import turtle. So to show the turtle on screen, we need to create a turtle object. Turtle object create करना पड़ता है, assign the turtle function to a variable. Follow the steps to assign turtle function to a variable. Type करना है आपको code, save करना है file with .py extension, रन करनी है मॉड्यूल और या फिर टेस्ट करना है पाइथन टर्टल ग्राफिक विंडो अपीयर हो जाएगी जो इसके साथ टर्टल शो करेगी इन द स्क्रीन ऑफ द प्रोग्रामिंग विद टर्टल. कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं टर्टल के साथ? टर्टल वर्क्स विद मूवमेंट एंड डायरेक्शन. इसके साथ वर्क करता है मूवमेंट और डायरेक्शन के साथ. टू अंडरस्टैंड its direction and motion, let us learn its associated motion functions. Turtle can move in four directions. Four directions को move हो सकता है forward functions और anti. Is used to move the turtle in forward direction. इसलिए उन्होंने move करने के turtle forward direction में with given distance. Distance value can be integer or float. Integer भी हो सकता है, float भी हो सकता है. Syntax क्या है? turtle object dot forward distance value या फिर turtle underscore object dot fg distance values. Backward function क्या होगा? bk या फिर bk is used to move the turtle backward या फिर opposite direction में move करता है turtle को. Direction जो given distance होता है, like syntax इसका turtle underscore object dot backward distance values. और लेफ्ट फंक्शन या फिर lt क्या होता है? is used to move the turtle head to the left direction. turtle का जो head है उसको लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है given angle के साथ, given angle value के साथ. एंगल वैल्यू भी आप इंटीजर भी हो सकती है और फ्लोट भी हो सकती है, लाइक turtle underscore object dot left angle value डाल देना आप यहाँ पे. Right function is used, rt is used to move the turtle head to the right direction. turtle head को right direction में करके given angle value से. angle value आपकी integer भी हो सकती है, float भी हो सकती है. turtle object right angle value or turtle object. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a good day.